हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट और उसके कुछ इम्प्लीकेशन डिस्कस किए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग। देखो, हमने कल ही बात की थी दो एक्स्ट्रा अकाउंट बनने वाले, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब प्रिपेयर होगा। लेकिन बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो पीएल अकाउंट से, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो, अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि हमको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। इसलिए हम नेट प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे और भी थोड़े ट्रांजेक्शन होने वाले विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स। After preparing P&L account, net profit is transferred to profit and loss appropriation account for distribution to partners through their capital account. P&L account is extension of PL account. NP, net profit और net loss is transferred to P&L appropriation account. Following are the appropriations. देखो, appropriations क्या होते हैं? appropriation मतलब पार्टनर्स को जो आप बांटने वाले हो प्रॉफिट में से। प्रॉफिट होगा तो बटेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बटेगा। जो एक तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो भी पेमेंट करने वाले हम पार्टनर को, हम मतलब वी आर द अकाउंटेंट ऑफ फर्म, आप फर्म के अकाउंटेंट हो, तो एज अ फर्म आप पार्टनर को क्या क्या पेमेंट करोगे? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। ठीक, उससे क्या मिलने वाला है? विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर। और एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब क्या होता है? आप अपने प्रॉफिट को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, अभी एक अलग से साइड में एक रिजर्व नाम से रख दे रहे हो, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको यूज़ कर सको। इस रिजर्व के ऊपर सारे पार्टनर्स का राइट होता है, इस रिजर्व के ऊपर सारे पार्टनर्स का राइट होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर फ्यूचर में कभी इस रिजर्व को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, अगर ऐसे कोई नीड नहीं लगी इस रिजर्व की और फ्यूचर में बांटना पड़ा, तो विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, पेमेंट टू पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिसीट फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कीपिंग द प्रॉफिट असाइड इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांजैक्शन एंड देयर जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट है तो आपकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर आपका लॉस है तो आपकी एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। देखो क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, तो जिस भी अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा वो क्रेडिट किया जाएगा, और जहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे हो उसको करेंगे अपन डेबिट। और लॉस का जस्ट उल्टा होता है, लॉसेस का जो नेचर होता है वो डेबिट नेचर होता है, तो जिस भी अकाउंट में लॉसेस जा रहे हैं उसको डेबिट करना है। तो दिस इज़ द लॉजिक। नेक्स्ट इज पार्टनर सैलरी और कमीशन। सी, सबसे पहले आप समझिए कि ये है क्या, इसके एनालिसिस करते हैं। सैलरी और कमीशन फर्म पे करती है पार्टनर को। सी, फर्म पे कर रही है पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और पार्टनर का क्या है? इनकम। तो पार्टनर की जब इनकम है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे अपन, तो जिसका भी एक्सपेंस होता है उसका डेबिट होता है, और जिसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं अपन। सो जर्नल एंट्री विल बी salary or commission account debit because it is an expense to partners capital account, and we will close this expenditure by transferring it to P&L appropriation account. आप इसको P&L appropriation account में डाल के close कर दोगे। P&L appropriation account debit to partners salary or commission account. Third is interest on capital. It is just like salary or commission as we discussed just now. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू द पार्टनर। वाई? बिकॉज पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया था, तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे कर रही है उस कैपिटल के ऊपर, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, हैंस इट विल बी डेबिटेड, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग। सो एंट्री इज, हैंस द जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Next, when you close this expense, P&L appropriation account debit to interest on capital. Next is fourth, interest on drawings. See, whenever a partner made interest on drawing and it is explicitly given in partnership deed that the interest is to be charged, then we'll charge the interest. Okay. Now, the interest on drawings is our income. Our means firm's income. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का इनकम है, बिकॉज ड्राइंग्स पार्टनर अपने घर लेके गया है, उसके ऊपर फर्म उससे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है. सो जो भी चीज़ हमारी इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज
पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, हैंस उसका कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे. सो जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू interest on drawings, and when we will transfer this income to P&L appropriation account, then interest on drawings account debit to P&L appropriation account. After this, next transfer to reserve. Next is transfer to reserve. Transfer to reserve means profit is kept aside for future. Okay, it is the right of all the partners in their profit sharing ratio. जर्नल एंट्री विल बी सीधे सीधा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जहाँ जा रहा है वहाँ क्रेडिट और जहाँ से निकल रहा है प्रॉफिट वहाँ पे डेबिट. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट. ठीक. आफ्टर ऑल दिस ट्रांजेक्शन इफ एनी प्रॉफिट इज स्टिल रिमेनिंग देन वील ट्रांसफर दैट प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स capital account in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio will either be given in partnership deed, and if it is not given, we have studied in the previous class that it will be always be equal as per the partnership act. अगर ये पार्टनरशिप डीड में कोई उन्होंने लिखा नहीं था तो हमेशा ये इक्वल होने वाला है. अगर 2 पार्टनर होंगे तो 1/2 और अगर 3 पार्टनर होंगे तो 1/3 1/3 1/3 सिमिलरली. नाउ लेट्स गो बैक टू ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट. सी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल सब डालते हो, फिर आपका यहाँ पे जीपी आता है, फिर इस जीपी को आप ट्रांसफ़र करते हो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, फिर वहाँ पे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स जाती है, एंड देन यू मूव टू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है. ये जो सेम नेट प्रॉफिट है ये यहाँ से कंटिन्यूटी में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, एंड देन यहाँ पे आप दूसरे ट्रांजेक्शन डालते हो. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे इनकम, और लास्ट में नेट प्रॉफिट होता है. ठीक. सपोज सबसे पहले ये प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट आने के बाद आप सैलरी डालते हो. सपोज 2 पार्टनर, दोनों की आपको सैलरी डालनी है तो ए की सैलरी डालो यहाँ पे, बी की सैलरी डालो, दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा. सिमिलरली कमीशन, अगर ए का कमीशन यहाँ डालिए, बी का कमीशन डालिए और इसका बाहर आ जाएगा टोटल. रिजर्व में अगर कुछ फिगर है तो रिजर्व में डालिए. सपोज रिमेनिंग उसके बाद बचता है 50,000 और इक्वल इनका शेयरिंग रेशियो है तो ए का कितना होगा 25, बी का कितना होगा 25,000 क्लोज अकाउंट. ओके, और यहाँ पे 70,000 टोटल. दिस वॉज P&L appropriation account. Now let's check an example. Example 1. A and B started business as partners on 1st April 19 with capital of 4 lakh and 3 lakh respectively. According to partnership deed, B is to get salary of 1,000 per month दिया हुआ है तो ईयरली सैलरी कितनी होगी B की 12,000. नेक्स्ट, A is to get 10% कमीशन और प्रॉफिट तो प्रॉफिट भी कहीं पे दिया होगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड एट 5% पर एनम. प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली. सो दिस इज अवर PSR. During the year, the firm earned a profit of rupees 4 lakh. This is our profit. Interest on drawings of A and B is 500 and 1000 respectively. देखो यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है. अगर यहाँ पे आपको ड्राइंग्स और परसेंटेज दिया होता तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते. तब पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर P&L appropriation account. See, after reading question, understand one thing. The first transaction will be transfer of profit from P&L account to PL appropriation account. So here is the profit first. Second we'll go according to the question. The first thing given is B's salary 12,000. This is our second entry. Third is A is to get 10% commission. This is our third entry, commission. Fourth entry, interest on capital, and fifth entry is interest on drawings. Last, if some profit will be remaining, we'll transfer that profit to the partners. Okay, so the first entry 4 lakh to be transferred to PL appropriation account. So this is the format of journal: date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. First entry, P&L account debit to P&L appropriation account, being profit transferred rupees 4 lakh.
9 row. Second entry we decided was B salary 1000 per month, that is 12,000. So second entry is B salary. First of all, salary is an expense, so salary account in bracket B debit to B's capital account. In class 11 we only used to write capital account, but now there are two partners, so we have to name the capital account. It was B's capital account, being salary paid. How much? 12,000. And similarly this salary will also go to PL appropriation account. PL appropriation account debit to salary account. Same amount, 12,000 and 12,000, being salary transferred to P&L appropriation. Second part is over. Now third, A is to get 10% commission on profit. So profit is 4 lakh, so 10% commission is 4 lakh into 10%, 40,000. Commission is also expense. Commission account debit to A's capital account, being commission paid to A, 40,000. Now let's transfer this commission. P&L appropriation account debit to commission account. Same amount, 40,000. Fifth, sixth entry. After commission, interest on capital is to be paid at 5% per annum. Profit are shared equally. So capital is 4 lakh and 3 lakh respectively. Working note 1, interest on capital A, B. What is A's capital? 4 lakh and B is 3 lakh. Into 5% into 5%. It will be 20,000 and it will be 15,000. So we can pass a combined journal entry for A and B both. Interest on capital debit, because it is an expense, to A's capital to B's capital. What was A and what was B's internal capital? 20,000 and 15,000 respectively. So here first put to A's and B's and capital. 20,000, 15,000, total 35,000, being interest on capital paid to A and B. Let's transfer this again to PL appropriation account. P&L appropriation account debit to interest on capital account being transferred. Short form, 35,000.
Next, interest on capital, profit are shared equally during the year. Firm and profit of 4 lakh. Interest on drawings A and B 500 and 1000 respectively. Let's directly pass the entry, last transaction. Now, interest on drawings is a income, so it will be credited, and A's capital and B's capital will be debited because we are deducting the amount from their capital account. A's capital, B's capital, debit to interest on drawings, being interest on drawings charge amount 500 and 1000 respectively. Total 1500. Now let's transfer this to P&L appropriation account. Interest on drawings debit to P&L appropriation account. Total amount 1500 being transferred. Now, as all the transactions are over, we shall check the profit remaining. सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, सो हमें अब प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट है या कुछ लॉस बचा है. तो इन द लास्ट एंट्री विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट और लॉस. कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए. सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स देखिए जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड ट्रांजेक्शन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रो एंड योर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, इसको रफ में ले लेते हैं एक बार. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट था दैट वाज ऑफ 4 लाख माइनस फर्स्ट ट्रांजेक्शन सैलरी पेड 12,000 माइनस कमीशन 40,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 314,500. Now this is the profit remaining after all the appropriations. We shall distribute this remaining profit to partners and their profit sharing ratio. ये प्रॉफिट सारे ट्रांजैक्शन के बाद बचा है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैसे करेंगे देखिए, इनका रेशियो इक्वल है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, इसका जस्ट हाफ. वन 157,250 157,250. So let's pass the last journal entry, 8th journal entry. See, we are transferring the profit from PL appropriation account to partners capital account. तो जहाँ पे प्रॉफिट जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा और जहाँ से जा रहा है, जहाँ से निकल के जा रहा है वो अकाउंट डेबिट होगा. PNL appropriation account debit to A's capital to B's capital, being profit transferred to partners in profit sharing ratio. Profit was 314,500 and distribution is 157,250.
and all the journal entries are over. So इन समराइज मैनर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डिसाइड कर दिया कि सबसे पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे P&L अकाउंट से PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद सीरियल वाइज सारे ट्रांजेक्शन किए एंड देन लास्ट में एक फाइनल एंट्री आएगी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है या रिमेनिंग लॉस है वो ट्रांसफ़र करो पार्टनर्स को इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए अब इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था. देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था, हम प्रॉफिट लेके आए थे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय P&L अकाउंट 4 लाख एज आई रिमेंबर. उसके बाद सबसे पहला ट्रांजैक्शन था सैलरी देने का, किसको, बी को, टू सैलरी बी. आपकी ये वाली एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, तो टू सैलरी 12,000. नेक्स्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो टू कमीशन 40,000. टू कमीशन 40,000. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000, ए का 20 एंड बी का 15. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 20,000, बी 15,000, टोटल 35,000 आउटसाइड. एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, and by interest on drawings. Interest on account debit to P&L appropriation account by interest on drawings 1,500. A 500, B 1,000, total 1,500 outside. Now, after recording all the transaction, at the last we have to distribute the remaining profit, which we already calculated 314,500 to profit transfer to partners capital A, B. $314,500 and then half of the profit and half of the profit. $157. $157,250, $157,250. So this was the concept of P&L appropriation account. Thank you class.